अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है फैज़ान तारिक और सीज़र कैपिटल के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, वेयर वी रिव्यू, समराइज एंड रीकैप इकोनॉमिक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स थ्रू आउट द वीक। जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉक ऑफ द टाउन, डॉलर क्राइसिस इन पाकिस्तान, और उसकी बुनियाद रखने वाली सबसे बड़ी वजह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। हाँ जी, करंट अकाउंट खसारा यानी आपकी मुल्क की इंपोर्ट्स बनिस्बत आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस सेंट ओवर बाय दी ओवरसीज पाकिस्तानीज का फ़र्क। जनवरी के महीने में सिर्फ $242 मिलियन का खसारा रिकॉर्ड किया गया। ये 10 गुना कम था बनिस्बत पिछले साल 2022 के जनवरी के महीने के। मेन वजह रही इंपोर्ट कंप्रेशन ड्यू टू दी रिस्ट्रिक्शंस लेड अपॉन इंपोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, माली साल 2023 के 7 महीनों में यानी जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक ओवरऑल इंपोर्ट्स 21% गिरी, लेकिन फूड एंड ऑयल ग्रुप की इंपोर्ट में फिर भी 12% का इजाफा देखा गया। फूड इंपोर्ट ग्रोथ की वजह रही फ्लड्स इन द कंट्री, high international food prices, partly due to the Russia-Ukraine war, neighboring Afghan crisis, and the import-led smuggling that followed to fill the food shortage there, and also maybe hoarding by food importers, citing food shortage in the future due to the डॉलर क्राइसिस एट होम। और ऑयल इंपोर्ट्स हाई रहने की वजह रही एलिवेटेड इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थ्रू आउट द ईयर 2022। अच्छा, एक्सपोर्ट साइड पे आ जाएं तो उधर 7% का डिक्लाइन देखा गया इन दी 7 months ऑफ द फिस्कल ईयर 2023। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन की मेजर वजह रही ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज एट होम due to the restrictions laid upon imports by the government of Pakistan. अच्छा, तो मूविंग ओवर टू रेमिटेंसेस, तो उधर 12% का डिक्लाइन देखने में आया माली साल 2023 के 7 महीनों में। मेजर वजह रही ओवरसीज पाकिस्तानीज की प्रेफरेंस फॉर हुंडी हवाला एज अपोज टू ऑफिशियल रेमिटेंस चैनल्स। Why? Well, because of the huge difference in official rates and the hundi hawala rates. और दूसरी वजह रही fear of default, resultantly hesitation of overseas Pakistanis to send money back to an unstable economy. अच्छा, going forward क्या status रहेगा imports, exports और remittances का? With no IMF, imports constrained रहेंगी, as we all know, due to the LC restrictions, and also because of the declining import demand as our rupee takes a beating against the dollar. लेकिन खाली import restrictions और weak import demand से काम नहीं चलेगा। सबसे मेजर इंपोर्ट यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को मज़ीद कर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज एज समर्स कम अलोंग बिजली की डिमांड पीक करेगी और लिहाजा फ्यूल इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। सो वर्किंग वीक कम करना पड़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ रिड्यूस करनी पड़ेंगी और सॉलिड डे लाइट सेविंग प्लान पे काम करना पड़ेगा, सो दैट शॉप्स क्लोज ऑन टाइम एंड दोज स्कूल हॉलीडेज टू फॉर एन extended period of time rather than the normal period of 3 months.
अच्छा, रेमिटेंसेस की बात कर लें, इन केस ऑफ नो IMF, तो they will surely improve from what they are as of now. Why? Because of the convergence of the interbank market rate with the open market rate. लिहाजा हुंडी हवाले के चैनल्स कम इस्तेमाल होंगे and remittances shall increase via official channels. Exports, in case of no IMF, shall keep on taking a beating with raw material shortage due to the LC restrictions in place. अच्छा, अगर IMF आ जाता है तो फिर क्या होगा? Imports बढ़ेंगी but would not explode. Why? Because Pakistani's purchasing power has taken a massive hit as inflation touches new highs every passing month, and imported items at the current exchange rate shall not have many buyers too. Exports की बात कर लें तो we shall definitely see some improvement with uninterrupted supply and availability of imported raw materials. और remittances जो 2 से $2.25 अरब पर मंथ एवरेज कर रही हैं could very well touch the $3 billion mark when imports normalize under the IMF program and the fear of default is gone. जी, तो to summarize it, आपका current account खसारा manageable रहेगा, IMF or no IMF. But without the IMF, keeping the current account deficit manageable shall come at a great cost. As import restrictions lead to factory shutdowns, job losses, 0 to maybe negative GDP growth, and goods shortages leading to an almost hyperinflationary environment. Acha ji, moving on from the macroeconomic review, let's shed some light on the seismic event that took place last year and shook economies across the globe, including ours. The Russia-Ukraine war. Acha ji, both parties seem reluctant to end the war anytime soon. Ukraine is determined to restore its sovereignty without losing or giving up an inch of its territory. और दूसरी साइड पे Russia pushed back such that its presence remains just on the south and east end of the Ukrainian borderlands, cannot afford to lose more face after its disastrous military campaigns last year. Internationally, China seems reluctant to force its ally Russia for a compromise. On the other end, the Western strategy is to keep funding Ukraine in the war so that Russia tires down eventually and does not have the capacity to attack or invade NATO countries. Western resolve to continue to help Ukraine was also substantiated by Biden's visit to the Ukrainian capital. अब देखना ये है कि whether it turns into a wider continental war या it remains as a localized war at the edge of Europe. Let's hope a diplomatic solution is found soon to end this war, improving global peace and security, all the while increasing availability of Russian oil and gas in the international markets. Acha ji, let's have a brief overview of the power sector. In 7 months of fiscal year 2023, yani July 22 till January of 23, electricity generation fell by 7%. This comes as no surprise as Pakistan goes through an economic turmoil. बिजली की जनरेशन में स्लो डाउन उसी टाइम शुरू हुआ जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सुकड़ना शुरू हुई. जुलाई से दिसंबर के पीरियड के दौरान यानी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2023 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने
3.7% की ग्रोथ रिकॉर्ड की। लगातार 6 महीनों में नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछले 13 सालों में नहीं देखी गई। इवन के पीक कोविड पीरियड में भी नहीं देखी गई। एलसी रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ते हुए डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स के माहौल में ये नेगेटिव 3.7% की ग्रोथ भी एक विन लगेगी इन दी कमिंग मंथ्स अहेड। अच्छा, कमिंग बैक टू दी पावर जनरेशन एनालिसिस, तो देखा जा सकता है कि जिस पीरियड में डिक्लाइन आया उसी पीरियड में बिजली के रेट्स की अपवर्ड रिवीजन भी होना शुरू हो गई थी। तो बढ़ते हुए बिजली की टैरिफ्स and declining industrial and commercial activities as indicated by the large scale manufacturing number point to even further decline in electricity demand as we move ahead in this year. So not good news for the likes of Hubco, Capco, Nishat Chunia, Nishat Power or Angro Power Gen, the power producing companies listed on the Pakistan Stock Exchange. Gee, so let's have a look on our sugar industry. But before that, a brief on its history. सन 2004 में, under the military regime, it was decided to lift the ban on the establishment and expansion of sugar mills into previously cotton belt districts of southern Punjab. इस पॉलिसी के नतीजे में मुल्क में चीनी की पैदावारी सलाहियत 2.5 गुना बढ़ गई बाय द ईयर 2018 और इस एक्सपेंशन से चीनी की कीमतों में गैर मामूली गिराव देखने में आया है। पिछली 2 दिहाइयों में रुपए की मौजूदा कदर में अगर देखा जाए तो चीनी की आज की कीमत कई गुना कम है बनिस्बत 20 साल पहले की कीमत से। इस एक्सपेंशन पॉलिसी ने पाकिस्तान के फूड एंड बेवरेज सेक्टर को एक नया दौर दिखाया। मतलब कोको कोला, पेप्सी और नेस्ले जैसी कंपनीज जो चीनी का वसी इस्तेमाल करती हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट्स की पैदावार में, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत से पाकिस्तानियों की पहुंच में आ गई सस्ती चीनी होने की वजह से। अच्छा, लुकिंग एट द करंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, तो इट इज़ रन बाय द पॉलिटिकल एलीट एंड इट इज़ क्लोज्ड टू कंपटीशन। मतलब देयर इज़ अ बैरियर टू एंट्री। No new entrant can enter the industry and add to the competition. The licenses to set up and operate new sugar mills are simply not available. Within the industry, क्योंकि sugar mills ने अपनी अपनी sugarcane territories maintain की हुई हैं, they barely compete for supply too. Underreporting प्रोडक्शन वॉल्यूम्स की इज़ अ वाइडली नोन फैक्ट। कम प्राइस पे अपनी चीनी ग्रुप कंपनीज को बेचना ताकि शुगर मिल का मुनाफा कम से कम रिपोर्ट हो, आम बात है। गन्ना किसान के पैसे रोक के रखना मामूल की बात है। इंपोर्टेड चीनी पे हैवी ड्यूटीज़ होने की वजह से फॉरेन कंपटीशन भी नहीं है और चीनी पे रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स एक और एडेड एडवांटेज है। और लास्टली, शुगर मिल के ज़रिए अपने हलकों में सियासी असरो रसूख कायम रख पाना is one of the biggest benefits the sugar mill owners get to enjoy. Acha, given all these protections and privileges as mentioned earlier, along with the move to the more fertile agricultural land under the Musharraf era, Pakistan's sugar industry has enjoyed remarkable returns over the last 2 decades. But
What does the future hold for the sugar industry? Locally, massive erosion of purchasing power due to record inflation does not bode well for sugary consumer goods demand in the near to medium term. And number of players in the sugar industry is too high to sustain at a time of stagnating demand. So to keep their profits growing, they must look outwards. That is, towards ethanol export and raw sugar tolling export market. For raw sugar tolling, they just need to import raw sugar syrup, refine and process it, and then export it to the Central Asian and Middle Eastern markets. Due to the protections and privileges enjoyed by the sugar mill owners over the last 20 years, as mentioned earlier, they were able to invest huge sums of money in improving the efficiencies of their plant and machinery. Many of the top 20 mills in the country, like JDW, Mehran, Mirpur Khas or Khairpur sugar mills, listed on the Pakistan Stock Exchange, not only have world competitive plant technology, but also enjoy significant economies of scale that will only increase from round the year plant operation. और इस एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए एरिया अंडर कल्टीवेशन भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा फॉर द वाटर इंटेंसिव sugar cane crop at the expense of other competing crops. Let's see in which direction these sugar industry players move into. Acha ji, on an ending note, let's put some light on the cement sector and the allied industries. Almost 50% का इजाफा देखने में आया एक सीमेंट बैग की प्राइस में ड्यूरिंग द 7 months ऑफ दिस फिस्कल ईयर 2023. बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के माहौल में लकी, मेपल लीफ, फौजी, टीजी खान, बेस्टवे एंड ऑल अदर सीमेंट प्लेयर्स resorted to price hikes to maintain their profit margins, but at the expense of a fall in volumetric sales. अच्छा, गवर्नमेंट का recently increase करदा FED और sales tax on cement bags is not going to let the prices cool down anytime soon. Moreover, local coal जो cement players use कर रहे थे instead of the imported coal due to the import restrictions, उस पे भी added tax लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. So another reason for cement prices to increase. इस बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कॉस्ट के माहौल में जिधर सीमेंट और स्टील की प्राइसेस आए दिन एक नई बुलंदी छू रही हैं, there is little hope for the construction industry to make a comeback and resultantly real estate prices to stay depressed. अच्छा, खाली यही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन डिमांड गवर्नमेंट लेवल पे भी बदहाली का शिकार है. गवर्नमेंट की PHDP स्पेंडिंग यानी रोड्स, ब्रिजेस, कनाल्स और डैम्स पे स्पेंडिंग रिकॉर्ड लो लेवल पे पहुंच चुकी है क्योंकि अखराजात में कमी IMF की एक बुनियादी शर्त है. अब इन सारी चीज़ों में ऐड करें आसमान को छूती सूद की शरह जिसने घर, बिल्डिंग्स, प्लाजास और सोसाइटीज़ को बैंक लोन्स के ज़रिए बनाने के अमल को गैर फाल कर दिया है. और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन ने किसी भी होम लोन पे अक़सात की अदायगी को बेशतर पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर कर दिया है. सीमेंट ऑफटेक, कंस्ट्रक्शन और उससे मुंसलिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ख़ास तेज़ी का इम्कान नहीं रखा जा सकता.
To make sense of all the economic news and developments, make the smart move today and invest with Caesar Capital.